Good morning, everyone. There is a few very good news. One is relating to Bharat Forge. Bharat Forge on Thursday received approval for housing all its defense-related investment under one entity. So everything will be changed into Aeron system now to Kalyani strategic system. So that will be a subsidy of Bharat Forge. So what will happen is, many defense-related thing when you do it, you cannot have it in the main company and you will not get orders. So that is why this is happening, which is very positive for Bharat Forge. We think Bharat Forge has a potential to give from current level at least 50% return in next 2.5 years. This has been our topic and it continues to be our topic. In another news, ONGC, India's top oil and gas producer, it will invest over $2 billion in drilling 103 wells on its main gas-bearing assets in Arabian Sea. So India wants to reduce the imports. So they are making ONGC and other companies to invest heavily to drill oil. So on that basis, this has been done. Even oil ministry is saying that demand will come down next year by 5%. This year, the growth in oil and gas has been at 10%. So they say FY24, it will slow down. So now your ethanol E20 policy is also one driver, and we getting into green hydrogen also will help. So in that effect, government is trying to reduce oil and gas import is what I can understand. Finance Minister on Thursday raised concerns over possible impact of El Nino on India this year. This will have an impact on our inflation problem. So this is something, it is an early signal how this monsoon will progress. So there are different opinion, and we are having a heat wave which is just now started, in few parts of India. Government is also planning to introduce new telecom bill in the monsoon session of Parliament this year. I don't have the detail of it. The Fed meeting, that FOMC minutes, has showed that there are strong consensus to continue tightening policy and affirm that further policy rate increase are expected going forward. And whatever the analysts are talking about, they think 25 basis point in March and May policy is could be a reality. So this will have some impact even on India. Higher interest rates are never good for stock market. That is why we see market in the last 4 or 5 months has not been performing. If you take even 1 year, many mid caps have not performed. Mid cap will always have, weak stocks will always have an impact of higher interest rate. That is why we need to be very stock specific. We like IT companies in this pack. IT companies have almost zero debt or they have cash in their balance sheet. That will help them to manage better. In that, we like Tech Mahindra, we like LTI Mindtree, we like Coforge, we still like Zensar Technology. Zensar has already given 30% return year till date, but still we like this stock. And in Sonata Software, Sonata Arm has bought entire stake in US-based Con system for $65 million upfront cash, and over next 2 years they will be paying $95 million. So this is very positive. Already the stock has reacted. Any correction in Sonata would be an opportunity to buy in this space. Tata Motor is in talks to raise $1 billion via stake sale in EV business. And if we calculate the EV business, then it comes to $10.5 billion. This is a ET report. Yesterday, BDL management was in CNBC, and that time they gave few data. The important data is order book is at 13,900 crores, and they have in the tender they will be allotted 2,500 crores extra.
So they are saying, it will be almost 15,000-16,000 crores when the March, April, they will get the order. And the export order in the total scheme of thing is 3,100 to 3,200 crores. And FY23, 24 revenue will be 3,800 crores, which is a superlative growth, which is 20%. And their margin, they are saying 20%. So it is slightly lower than what they have done previously. But now, I think management has been a bit conservative on this. Z Entertainment has been excluded from the F&O as NCLT to hear appeal against Z insolvency has started. So that is a bit negative, but we need to understand these loans are very small for Z Sony merger. So if the management is smart, they need to settle all these small loans and they need to come out of NCLT. But what happens is something we need to watch out for. We cannot comment on this. DLF is saying it will repay 5,000 NCD of a face value of 10 lakh. Their maturity is in March 2024. They are pre-maturing it or paying it upfront 1 year before. The value is total 500 crores, which is slightly positive for DLF. No, and we need to understand, few stocks are still looking good. In that space, IT, LTI Mindtree, Coforge, OFSS, Emphasis, Tech Mahindra, Zensar Tech, even BS Software after the major correction which has happened. These are few stocks which we like. Over to you, team. थैंक यू सर। अभी ये कॉल को हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं भारत फोर्ज से। भारत फोर्ज को एक अप्रूवल मिला है डिफेंस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। जो पहले एरोन सिस्टम था वो अभी कल्याणी सस्टेनेबिलिटी सिस्टम पे ट्रांसफर होगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हम वैसे भी हमारा ये दिवाली पिक है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। हमें लगता है कि भारत को ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम आपको शायद 50% के करीब गेन्स देखने को मिल सकता है। टाइम फ्रेम रहेगा 2-2.5 साल के करीब, बट काफी पॉजिटिव है। करेक्शंस पे हमें एक ऑलरेडी स्टॉक करेक्शंस पे ही चल रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक पे हमें भाई इस पे ध्यान रखना चाहिए और इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगला ओएनजीसी के ऊपर है। ओएनजीसी इन्वेस्ट करेगा 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा। ये बेसिकली ड्रिलिंग के लिए होगा। जो 103 वेल है उनके अरेबियन सी में। तो ये आगे चलते हुए नियर टर्म फ्यूचर्स के लिए भी ये एक पॉजिटिव रहेगा। गवर्नमेंट टेलीकॉम बिल शायद टेलीकॉम बिल में कुछ चेंजेस कर सकती है ये मानसून सेशन में। काफी ज्यादा उसके अपडेट नहीं है, बट ये टेलीकॉम के रिलेटेड अगर मानसून में कुछ अपडेट्स आते हैं मानसून सेशन में, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फेड पे एक अपडेट है। जो एफओएमसी की जो मीट है वो शायद पॉलिसी और टाइटनिंग करने के लिए सोचेंगे। रेट हाइक की बात कर रहे हैं। ऐसे जानने में आया है कि 0.25 और 0.25 ये 0.25 का जो रेट हाइक देखने को मिल सकता है मार्च और में। यही रीजन है जिस वजह से मार्केट लास्ट 3-4 महीने से प्रेशर में है। ये रेट हाइक ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। बेसिकली ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है मिड कैप में। जो वीक स्टॉक्स है उसमें ज्यादा आपको फॉल देखने को मिलता है। तो इसके चलते अगर मार्केट वीक भी रहता है तो आईटी कंपनीज में हमारा ये मानना है कि आईटी कंपनी के ज्यादातर जीरो डेब्ट होते हैं, उनके पास कैश बैलेंस काफी होता है। इसके चलते हमें लेटेस्ट अपडेट में हमको टेक महिंद्रा एक ऐसा पिक है जहाँ पे हम लोग को मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पिक हमको लग रहा है कि इसमें बनना चाहिए। सो टेक महिंद्रा पे ध्यान रखना चाहिए। एलटीआई माइंट्री काफी अच्छा लगता है। सेंसर है, कोफोज है, और कुछ हद तक अभी हमने ये बीएस सॉफ्टवेयर को भी देखा है जहाँ पे वो मोमेंटम देखने को मिला है। तो हमारा ये मानना है कि मार्केट जब करेक्ट होता रहेगा, बेसिकली जब करेक्टिव मार्केट में एक आईटी एक ऐसा है जो सपोर्ट करेगा। तो हमें ये काउंटर्स पे ध्यान, आईटी वाले काउंटर्स पे ध्यान रखना चाहिए।
अगला अपडेट सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो उन्होंने सोनाटा आर्म सिस्टम जो उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है $65 मिलियन के, और 2 साल में वो करेंगे करीब $95 मिलियन के। ये एक स्टॉक भी हमको अच्छा लगता है। करेक्शंस पे हमें लगता है कि इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। टाटा मोटर्स का एक अपडेट है कि वो $1 बिलियन का स्टेक सेल करेंगे ईवी बिजनेस का, जो 10.5 बिलियन के करीब हो सकता है। तो इन नियर टर्म के लिए टाटा मोटर्स के ऊपर भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। कल बीडीएल का मैनेजमेंट का सीएनबीसी में कमेंट था, उनका ऑर्डर बुक्स के बारे में उन्होंने अपडेट किया था कि 13,900 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक है, और जो टेंडर्स जो पाइपलाइन में हो 2,500 से 3,000 के करीब उनके एक्स्ट्रा टेंडर्स पाइपलाइन में है। तो नेट नेट ये 15,000 से 16,000 के करोड़ के ऑर्डर बुक्स हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स उनके बताया गया कि 3,100 3,200 के करीब उनके एक्सपोर्ट्स है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है वो 3,800 करोड़ के करीब है। तो एक 20% के करीब अप्रिसिएशन होता है, तो ये काफी पॉजिटिव रहेगा ये स्टॉक के लिए। तो वैसे भी हम डिफेंस स्टॉक में ये बीडीएल और एचएएल को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए। जी को एफ से निकल फिलहाल एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो उनके जो अभी जो एनसीएलटी के जो भी न्यूज में है, तो उस वजह से टेम्परेरी वो F&O सेगमेंट से एक्सक्लूडेड किया गया है सी को। अगला है एक डीएलएफ के ऊपर। डीएलएफ के जो 5,000 करोड़ के एनसीडी बॉन्ड्स है, वो जिसके फेस वैल्यू 10 लाख के करीब है, उसका मैच्योरिटी है मार्च 24 में। बट वो एक साल पहले ही एडवांस में वो जिसका नेट वैल्यू होता 500 करोड़ के करीब, वो एडवांस में ही वो रिपे कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली पॉजिटिव न्यूज बनता है डीएलएफ के लिए। के बाद चलते हैं विप्रो के। तो विप्रो पे एक अपडेट था कि उसके जो प्रेसिडेंट है राजन खोली, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो बेसिकली विप्रो में हमने देखा है कि काफी ये 3-4 बार हो चुका है कि वो जो हायर मैनेजमेंट लेवल पे काफी सारे रिजाइन्स देखने को मिलता है। ये जो राजन कोहली है वो बेसिकली 60% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज बन सकता है विप्रो के लिए। जी के ऊपर जो अपडेट है, जी के जो एमडी है पुनीत गोयनका, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में एनसीएलटी में वो रिलीफ के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। अगर देखा जाता है तो ये जो सिटी का जो अमाउंट है वो 440 करोड़ के 440 करोड़ के पास है, और जी के पास ऑलरेडी 600 करोड़ के कैश बैलेंस है। तो अगर वो उनको ये सेटलमेंट करना है तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उनके पर्सनल लाइक जी को ये सेटलमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो करते हैं तो ये जी के लिए पॉजिटिव न्यूज बनता है। टेक महिंद्रा के ऊपर है एक अपडेट है, जहाँ पे उन्होंने नया पार्टनरशिप अनाउंस किया है वोडाफोन जर्मनी से। जो ऑलरेडी उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था 2019 में किया हुआ है। ये है बेसिकली ये उनके जो सेल्स सॉल्यूशंस मोबाइल के रिलेटेड केबल टीवी सर्विसेज बिजनेस के रिलेटेड है। तो ये बताया गया कि जो यूरोप रीजन में जो टेक महिंद्रा का जो है वो करंटली 26% के रेवेन्यू को एड अप करता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है टेक महिंद्रा के लिए। अगला एक है एक्सिस बैंक के ऊपर। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो सिटी बैंक के जो इंडिया कंज्यूमर बिजनेस और एमजीएफसी बिजनेस जो है उसको एक्वायर कर लिया है। और ये पूरे ये जो नया जो स्टार्ट होगा वो 1 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा, और एंटायर प्रोसेस 12 महीने के स्ट्रक्चर में खत्म हो जाएगा। तो ये जो डील है इसको सीसीआई के अप्रूवल मिल चुका था 26 जुलाई 2022 में। सो नेट नेट तो ये भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि एक्सिस बैंक के लिए ये पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। आखिर में हम रोल ओवर का बात कर लेते। कल हमने रोल ओवर देखा, मार्केट में उतनी गिरावट नहीं देखने को मिली जितना हमें लग रहा था। बैंक निफ्टी ने काफी अच्छे से सस्टेन किया, 40,000 के करीब हमने बैंक निफ्टी को क्लोज होता हुआ देखा है। और रोल ओवर अगर आप देखोगे तो रोल ओवर निफ्टी का 73% था, और एवरेज 3 महीने का जो रोल ओवर है वो 77%। तो रोल ओवर थोड़ा कम देखने को मिला है। तो ये हमें थोड़ा सा कॉशियसली हमको अप्रोच करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी जो रोल ओवर था 84% के करीब था, और एवरेज 3 मंथ्स का अगर हम रोल ओवर देखते हैं तो 85% के करीब रोल ओवर था। रोल ओवर्स थोड़े कम हुए हैं।
तो हम इसको थोड़ा सा कॉशियसली देख सकते हैं। बट जो हमने देखा है कि जो फेब सीरीज से जो मार्च सीरीज में जो रोल ओवर है उसमें ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी और सीमेंट, ये इसमें बिल्डअप जो देखे तो लॉन्ग बिल्डअप देखे हमने। तो हमें लगता है कि जब भी मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल होगा तो ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी और सीमेंट काउंटर्स में काफी पॉजिटिव रहेगा। सीमेंट में हम अल्ट्राटेक काफी दिनों से बोल रहे हैं, एफएमसीजी में आईटीसी है, तो ये स्टॉक्स हमारा वैल्यू पिक है, तो जब भी करेक्शन आता है मार्केट में हमें लेना है। जो प्रेशर देखने को मिला है वो फाइनेंस और फार्मा है। तो फाइनेंस में बेसिकली जो एचडीएफसी बैंक है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। कल हमने देखा था कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा तेजी देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि अगर आज मार्केट चलता है तो एक्सिस और आईसीआईसीआई में आपको ट्रेडिंग वाले मूव मिल सकते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। फेडरल बैंक एक स्टॉक है जो हमारा वैल्यू पिक भी है, तो उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप ध्यान रख सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकली जो 1 या 2 दिन के लिए हमें बीडीएल और नारायण हृदयालय ये अच्छा लगता है। तो हमें ऑटो में एक काउंटर और है जो एमएनएम पे, हमें लग रहा है कि एमएनएम भी नियर टर्म में उसका जो पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट में हम बाउंस बैक देख रहे हैं 17,800 18,000 के करीब। पहले तो निफ्टी बाउंस करना चाहिए, वहां पे सस्टेन होता है, अगर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है तो हम फिर से रिव्यू करेंगे। और बैंक निफ्टी में यही लेवल 41,000 के करीब आता है। अगर बैंक निफ्टी 41,000 के करीब चला जाता है और उसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो फिर हम नया लेवल्स की बात कर सकते हैं। बट करेंट लेवल पे हम बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा मार्केट के लिए। Technical and derivatives update. In yesterday's trading session, Nifty again on a downbeat node, and if you see Nifty could manage to hold 17,400 levels, and we found a sharp pullback from those levels, and we see a muted expiry low. Much movement was there, only 50 odd points, and we could be seeing that. So that was very beneficial after a huge sell of a day before expiry. Like next you see Nifty manages to 17,500. So now if you see then 17,450, 17,500 is a demand zone for the index and a crucial level for the bulls. This would be the last leg for the bulls. Otherwise, it could be any further selling if we are able to reach those levels. Now, a good point is in Bank Nifty. Bank Nifty has formed a dragonfly doji. If we are able to close about today's high, then we could see a temporary bottom in this fall, and we could be again retesting 40,800 levels and 41,000 levels also. But feeling which if we have closing below days low, then we will be reaching up to 39,000 levels. Now coming to the monthly charts, if we see then this could be the third expiry of the month. We can say we are close on a negative note. If we are able to hold these levels, then this could be a very good. This expiry could be a very a breather sort of, or a relief rally could be seen. But vis-a-vis, if you are failing to hold in a couple of days also, then we could see a downside move ahead going forward. Similarly, on coming to the sector specific on yesterday's, we could see some pocket of strength in the metals, FMCG and Bank Nifty alone index was there, while realty, media and consumer durables and pharma stocks were under pressure. So technically now on the rollover front, say if we see then rollovers were muted from the average of 77%. It was for the bank Nifty, for the Nifty, it was to 73%. Vis-a-vis Bank Nifty also, there was a slightly rollover from 85% to 84%. On the other stocks, if we see rollover, the highest rollovers were seen in Torrent Pharma, Havells, and M&M. Today, 97%. That is an average deviation of 4 to 5% each from their averages. And while as in Coforge, Navin Fluorine, and Syngene, we have seen less rollover, so that was there was short covering weakness in these stocks, and that was the positive side also on that. So coming to the now Nifty or futures and derivatives data on the futures fund, if you see that was a short bit of today on 16%, that is addition of 2.17 million shares. PCI has shown an uptick from 0.69 to 0.79, so that is a positive indication. While in Bank Nifty futures also shown a short belt up to the tune of 4%, and PCR also bounced back from the oversold zones of 1.5 to 0.7 months. Now coming to the option data fund from the next expiry 17,500 and 7,600 could be the hurdles for the index, where there is heavy call writing in the tune of 3.25 million and 3.27 million shares. While on the put front, if we see 17,400 and 17,500 are the strikes where intermediate supports are seen for the coming expiry. And whereas in the Bank Nifty, if you see on the put side, 40,000 and 39,500 are the zones where we could see some supports, and these are acting as a crucial. Yesterday, Bank Nifty managed to hold 40,000 levels also. And while I was in the call front, 40,500 and 40,000 again coming. So there is a shadow on this. So this could be a make and break zone for the index.
Now coming to the FIS data, FIS has not changed their position. They are mildly, they have yesterday about 90 to 3,500 contracts. So they are net short by 1 lakh contracts and they are carrying this 1 lakh contracts for the coming expiry too. So the long short ratio stands to 19%. While as in the cash side, if you see, they have sold to the tune of 1,500 odd crores, 1417 crores, I would say, and DIS bought to the tune of 1,586 crores. So India VIX is also trailing sub above 15 level, so that is also a little bit concerning, and it should cool off. Otherwise, we could see a sharp rally in the India VIX also. Stocks or sectors we can focus on Bharat Dynamics and Narayan Hridayalaya, which are looking good on charts. So that could be stocks will be kept in focus. Coming to the SA, is showing a muted opening of 51 odd points jump as well. So there could be a bounce back from those levels. Any dip towards 17,500, 17,450 level should be used an opportunity to add long. Breaking 17,400, so that should be a stretch stop loss for the people. We could slide through. So that's it from mine. I'll hand over to Bhavisa for more updates. Yeah, hi, good morning, team. So first, starting with update on Wipro. So Wipro's president Rajan Kohli has resigned after a nearly 3-decade career in with Wipro. So this does not bode well for Wipro, which has seen many senior level exits in the last few months. Second on Z Entertainment. So the company's MD Puneet Goenka has moved to NCLT in his personal capacity, seeking relief against the order passed by NCLT, which had admitted Z to insolvency process. So when we look at Z's balance sheet, they have a cash of 600 crores, and this total amount that is owned to Citi is only 440 crores. So it is likely that we believe that Z can comfortably pay up the contingent amount and settle the case if required. So TechM has announced that it has expanded its partnership with Vodafone Germany, which was initially entered during 2019. So as a part of this multi-year deal engagement, Tech Mahindra will deliver unified sales solution across mobile, cable, and TV business services. So this bodes well for Tech Mahindra. Lastly, on Axis Bank, so Axis Bank has informed that it will take over, it will complete the takeover of Citibank's India consumer business by 1st March, and post that all customers, employees, and assets of Citi will be transferred to Axis. So this will be quite positive, and Axis will pay a consideration of 12,000 crores. And after completion of deal, there will be a transition period of 18 months, during which Citi customers will migrate to Axis Bank. So overall, net positive, and we have a buy rating on the stock with a target price of 1120.